Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you to Yourpedia Education. So, as you all know कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं for civil engineering. Morning में we are preparing for civil engineering and in the evening हमारी क्लास रहती है for environmental sciences at 4 p.m. So, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है that will be on trusses. तो ट्रेसेस पे हम काफी सारे लेक्चर्स कर चुके हैं. A lot of lectures already completed हैं. और अगर आप कुछ और नया देखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू हैव एनीथिंग न्यू, तो आप यहाँ पे है एनवायरमेंटल साइंसेस में. सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 4 p.m. एवरी डे. ओके, तो अब इसमें नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट के लिए सेशन से. इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट, लेट मी गिव यू वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम माय एंड. My name is Ruchin Tejawat and I am going to be the instructor for your course, whether it is going to be civil engineering or environmental sciences. Apart from that, I have post-graduated from IIT Kanpur, plus I have secured an All India rank of 165 in GATE exam. Also, I have served as a project engineer in Mumbai Railways. So, you can think of, I can tell you how to get an All India rank under 100. किस तरीके से ला सकते हैं. Okay, that is actually not going to be that easy, but yes, it is possible. Also, these are the classes that are under my supervision. I have also served as project engineer in Mumbai Railways, and from the last 6 to 6.5 years, I have been training and mentoring students for GATE and ESE. Okay, so I guess my voice is audible. If anyone is having a problem, just do tell me. Okay, so I guess my voice is audible. So this is the team of Yourpedia Education. So as you can see, faculties are all very dedicated for you. आपको अच्छे एक रास्ते तक पहुंचाने के लिए they are all very much dedicated. They keep on giving videos, free classes on YouTube and all. So likewise, what we are offering is, we are offering you GATE selection module. GATE selection module. Now, what is this GATE selection module? In this module, we are offering you complete video sessions. सारे के सारे आपके पास video sessions रहेंगे. Apart from that, you will also get post-GATE counseling. Then you will have online test series, and finally you will have micro modules. ये सारी की सारी चीजें रहेंगी. वीडियो सेशंस अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 आवर्स के वीडियो सेशंस रहेंगे. उसके बाद में आपको पोस्ट गेट काउंसलिंग, वंस यू आर डन विद द वीडियो सेशंस, एक्चुअली सीरीज ऐसे जाती है, वंस यू आर डन विद वीडियो सेशंस, यू विल हैव ऑनलाइन टेस्ट सीरीज. ओके, अब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप कैसा परफॉर्म करते हो, उसकी बेसिस पे आपको अपने आप को जज करना. आफ्टर दैट you will be getting micro module. Now, what is this micro module? It is a strategy by which in just 15 days, in maximum of 15 to 20 days, your syllabus will be complete. How it is that? It is through questions. We will be solving a lot of questions. बहुत सारे question. Approximately, if I talk, generally I say approximately 1500 questions will be there for you need to solve. After you are done with this, आप देंगे GATE का exam. Okay, once you are done with GATE, we'll meet again in your post-GATE counseling session. Now, what is this post-GATE counseling? It is not ordinary post-GATE counseling कि आपको बस बता दिया कि आप ये फॉर्म भर दो, ये कॉलेज भर दो, ये आपको IIT मिल सकता है, NIT मिल सकता है. It is not like that. We give individual attention to a student. As a mentor, I know post-GATE counseling में we'll be giving snap interviews and mock interviews. And I'll tell you, post-GATE counseling is very effective. Snap interviews and mock interviews. Now, what is this snap interview? Snap interview, you prepare a subject and you come over in front of the instructor or the mentor and they will ask you questions. Okay, based on that, you can judge yourself at what level you are. After you are done with this snap interview, जब का preparation अच्छा खासा हो जाए, then you will be coming on to mock interview. Okay. अब मॉक इंटरव्यू में बेसिकली क्या होता है,
there will be 4 to 5 mentors, 3, 4, 5 mentors will be there to take your interview. Okay, बिल्कुल आपको इंटरव्यू के जैसा ही एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा और आपका इंटरव्यू प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा. This all will be starting at just rupees 6501. If you enroll into our course, you will get everything. Okay. If you want to know anything more, you can just visit www.yourpedia.in. See, on our official website, we are the only one in entire India. We are the only one who have launched courses for environmental sciences and XC. No one else has launched yet. We are the first one. Okay, so we are offering you all the things. जो भी हम गेट के लिए ऑफर करते हैं सारा का सारा आपके लिए भी ऑफर कर रहे हैं. So if you can see, अगर आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हैं, आप गेट का एग्जाम देते हैं, आपको पोस्ट गेट काउंसलिंग मिलता है. These are some fantastic results of post gate counseling at a score of 358. अगर आपका गेट स्कोर somewhere close to 300 to 500 आता है, most of the students get disappointed कि यार अब तो शायद ना हो पाए. Okay, at a score of 300 to 500, it looks pretty much कि अब शायद सिलेक्शन ना हो किसी के भी, but that's not true. सिलेक्शन हो सकता है if you know the correct strategy, correct path अगर आपको पता. Okay, and that's what we are giving students. At a score of 358, he has secured a seat in IIT Delhi. Likewise, we have a lot of results. अब देखोगे, these are all results. At a score of 500, she has secured a seat in IIT Delhi, structural engineering in general category. We can just think of what is caliber of this post-gate counseling. कितना strong है, कितना effective है. Okay, you can again see this at a score of 391, score of 441. Okay, these are the results of GATE 2021. पहले के नहीं है, 2021 के हैं. If I show you more results of our GATE 2021, these are more results of GATE 2021. सारे 2021 के हैं, जितने भी results we are showing you. So it is always better कि आप एक बार, it is worth trying. At just a fee of 6501, you are getting everything. Okay, you are getting everything at just rupees 6501. So enroll करें, पढ़ाई करें, and just go into your dream IITs or NITs, whatever you want. Okay, sure. So let's now start over with our topic on trusses. Okay, so till now trusses में we have seen analysis of determinate truss. Analysis of determinate truss. अब determinate truss हम कर चुके हैं. इसके अंदर हमने क्या देखा था? There are two methods. Method of joints and method of section. ठीक है, ये हमने देखा था. अब चलिए, अब एक जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ये सारी की सारी चीजें रिकॉल करने के लिए लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. हमने क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली कर ही लिए. एक क्वेश्चन को और करते हैं. लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. Okay, going to give you a question in front of you. Let's take okay. This is okay. So let me write this as 3 meter
This is also 3 meter, and let's say this height is also 3 meter. Okay. Now let me just name it as A, B, C, D, and E. All right. Now forces are acting such that here is a force of 500 kilonewton, and here is a force of 1000 kilonewton. Okay, and let us say point D, we have a force of downward 2000 kilonewton. Downward 2000 kilonewton. All right. Now find ratio of forces in. Let's say we take AD upon let's say CD. AD upon CD. Okay. AD upon CD we have to solve. This is the ratio that we need to find. Force in AD divided by force in CD. This we have to find. They can ask you anything. Okay. They can ask you like force का summation पूछ लेंगे, force को multiply करके पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं. So you just try to solve it out. Force in AD by CD. This we have to calculate. Okay. It's all right. Firstly, let us calculate. There will be a reaction RA. There will be a reaction RB. Okay. A reaction RB. Now, if I say we'll first have to find out what are the reactions. So for this, let me just slide it over here. We'll find the reactions. First, summation of force in y direction equal to 0. This will give RA plus RB equal to 2000. Okay. Secondly, force in x direction equal to 0. Summation of force in x direction equal to 0. This will give HA equal to 1500. Summation of moment at, let's say, B equal to 0. Doing B equal to 0. So this will give RA into 6 minus 2000 into 3 minus 1000 into this distance is 3 and minus 500 into, let's say this distance is half of it since it is symmetrical. So let us take it as 1.5 meter minus 1.5. This is equal to 0. If we solve it, I will get 6000 plus 3000 plus divided by 6. Okay. So if you solve it, you will get 9000 plus
2250 2250 यानी the reaction RA we are getting as 2250, so reaction RB we will get as minus 250 kilonewton, correct? So let me write over here. So let us just, all the reactions that we have got, we are just writing that thing only. So this is equal to 1500 kilonewton. This is equal to 2250. This is equal to downward 250 kilonewton. Downward 250 kilonewton. Okay, right. तो यहाँ पे we have done all the calculation, जितनी भी required calculation थी वो सब हमने कर लिया। अब देखें यहाँ से हमें निकालना है फोर्स इन एडी एंड फोर्स इन सीडी। एडी और सीडी में निकालनी है फोर्सेस। व्हाट वी कैन डू, सिंपली अगर मैं यहाँ पे इफ आई एम यूजिंग दिस मेथड ऑफ सेक्शन, अगर मैं इस तरीके से कट लगा दूं, ओके, मेक अ कट समथिंग लाइक दिस, तो इट इज पॉसिबल दैट कि मैं दो अलग अलग सेक्शंस को कट सकूं। ओके, फर्स्ट वन ये हो गया, तीन कट लग रहे हैं और उसके बाद में हमारा एक सेक्शन अलग दूसरा सेक्शन अलग, और उसमें मेरे को वो फोर्सेस भी निकल रही हैं जो कि अननोन है। So I will take forces onto the left and to the right. Onto the left अगर मैं लेता हूं, so it will look something like this. Then there is this, okay, और उसके बाद में है ये, and then this. Okay, let me write what are the forces acting. 2250. Here is 1500. This is joint A. This is force in AD. Force in CD. And this is force in CE. Here there is a load of 1000 kilonewton. ठीक है, ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर बन गया है। दिस इज बेसिकली द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लेफ्ट साइड। हमने लेफ्ट साइड का ड्रॉ किया है। अब मुझे एडी और सीडी निकालना है, विच इज नॉट दैट टफ, इतना टफ नहीं दिखता है। चले, ये एंगल निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी दिस एंगल? दिस एंगल इफ आई राइट, this is equal to this height divided by this, simply we will get theta is equal to 45 degree. In the exam it is not necessary कि आपको थीटा हर बार 45 मिलेगा, ये जस्ट हमारी कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम ले रहे हैं दैट थीटा इज 45 डिग्री। ओके, अब नाउ यहाँ पे थीटा इज 45 डिग्रीज, व्हाट वी कैन डू, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 45 डिग्रीज, this is also equal to 45 degrees. Now let's do summation of force in x direction equal to 0. So in x direction we will have force in AD plus force in CE cos 45 plus 1500 minus 1000. This is equal to 0, so this will give force in AD plus force in CE cos 45 plus 500. This is equal to 0. Okay, this is equal to 0. अब इसके आगे की चीज देखते हैं, यहाँ से यहाँ पे ले लेते हैं, let me make it space, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। Okay, let's do summation of force in y direction equal to 0.
वाई डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 2250 इज टू द अपसाइड और माइनस FC sin 45 minus FCD equal to 0. Okay, equal to 0. All right. Now, summation of moment at point A equal to 0. Summation of moment at point A equal to 0. A पर हम लोग moment 0 कर रहे हैं. So this will give, now if you see closely, this distance is equal to 3 meter. Okay. Also, distance from here to here is also 3 meter. दोनों के दोनों 3 meter हैं. Summation moment at A equal to 0. This will take clockwise. So force in CD into 3. This is clockwise plus force in C sin 45 into 3 clockwise. This is equal to 1000 into 3. Okay, 1000 into 3. So now we just need to solve these three equations to find what is the unknown. What is AD? We need to find what is the force AC. Force ED, if I solve it, okay. So this question has been framed, and if you solve this equation, equation 1, this is going to be equation 2, and if you solve this, solve equation 1, 2 and 3 to get unknowns, force in AD and force in CD and force in C. जैसे आपके पास ये आएगा, you can calculate the force in AD divided by force in CD. और हमसे यही पूछा है. ओके, ये सारी चीजें हम लोग क्लासेस के अंदर भी पढ़ते हैं. ओके, नाउ अब ये पार्ट बड़ा सिंपल सा है. मेन इशू हियर था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस जगह पे है कि आपको फोर्स निकालने के लिए पहला अप्रोच किस तरीके से लगाना है. अगर आपको अप्रोच समझ में आता है तो ऑल थिंग्स आर इजी. कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस अप्रोच लगाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है. ये समझ में आ जाता है तो एवरीथिंग आई गेस इज इजी. ऑलराइट, नाउ दिस इज व्हाट बेसिकली वी हैव स्टडीड इन फॉर डिटरमिनेट ट्रस्ट. अगर हम लोग बात करें तो ओके, अगर हम लोग बात करें इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट का, तो इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट में तो बहुत सारी चीजें हैं. ओके, एंड इट इज प्रीटी लॉन्ग टॉकिंग अबाउट indeterminate trust. Indeterminate trust is pretty long, बहुत ही लंबा सा मेथड होता है इसके लिए. ओके, सबसे पहले तो indeterminate trust कब होता है? When ds is greater than 1. ds is greater than 1. Now ds greater than 1, there are few methods of solving. A, हम लोग सॉल्व करते हैं यूजिंग यूनिट लोड मेथड, एंड सेकंड वी सॉल्व इट यूजिंग strain energy method. Try to solve using strain energy method. Okay, so maybe I guess what is the time right now?
Okay, so maybe we'll start off with indeterminate trust in the next lecture itself. Okay, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना है. मैंने आपको कुछ गेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं. ओके, गेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं हम लोगों ने. इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट पर भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इवन गेट के भी करेंगे, बट पहले समझना जरूरी है कि ये मेथड्स कौन कौन से हैं. ओके, so that will take the next section. Till then, just visit our official website yourpedia.in. और यहाँ पे we have actually started our winter session, admissions for winter session. So you can just log into the website और वहाँ पे आपको सारा details मिल जाएंगे. You'll find every detail out there. Okay. So we are offering you almost everything. सारी की सारी चीजें हैं. So we'll meet at 4 p.m. today. At 4 p.m. today we'll meet. Till then, everyone take care. Bye bye.